कैसा ये कमाल क्या करे, धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम तारा धूम ता। तो आपन करने, तो जी हाँ भाई, यो आपन करने वाले हैं कोडिंग 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 कोडिंग। वी आर गोइंग टू बी कोडिंग। तो हमको पहले देखना है कि हम लाइव गए हैं कि नहीं गए हैं, राइट। हम आ गए हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन कहाँ है, बैंड सब्सक्रिप्शन कहाँ है, सब्सक्रिप्शन वाले लोग कहाँ दिखते हैं, वो भी हटा दिया है अपन ने। कहाँ है यूट्यूब भाई, थोड़ी देर के लिए अनुक ऑफ कर रहे हैं अपन, बिकॉज अपने को अपना सब्सक्रिप्शन देखना है। यप, वी आर लाइव, वी आर लाइव। इसको करो बंद, ठीक है। नाउ आई विल गो एंड देखते हैं। हाँ जी, क्वालिटी क्या है भाई, थोड़ी देर के लिए अनुक ऑफ कर रहे हैं अपन, बिकॉज अपने को अपना सब्सक्रिप्शन देखना है। बंद कर लो भाई। यप, ठीक है ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी अपना जो नेक्स्ट जेस का जो कितना मेमोरी खा रहा है। एक्टिविटी मॉनिटर में जाके अपन देखेंगे कि बेटा इसकी तो लग गई है भाई, मेमोरी पूरा यूज़ हो गया है, लोड़े लग गए हैं सिस्टम के। तो इसको तो अपन चलाते रहेंगे। या तो वी वर डूइंग दिस, हम कर रहे हैं ट्यूटोरियल हेल और वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग थोड़ा कम होएगा, बिकॉज हम ये ट्यूटोरियल को पूरा फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज या इसलिए हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। We're just going to go through those very quickly. But before that, we're just going to set up our class and layouts. So over here, if we have an error, we're going to return a div with a margin of 5. Okay, तो ये एरर वाला जो बेसिकली ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एरर ऑलरेडी दे देता है, हम ऑलरेडी लाइक यूज़ किया था। यू ऑलरेडी सॉ क्या क्या यूज़ डैशबोर्ड मैट्रिक्स क्वेरी से आ रहा है। लेट्स डू इट अगेन, console.log metro। तो दिस वुड लेट अस नो कि क्या क्या आ रहा है उसके थ्रू। तो here we go, it is rebuilding, I don't know what's up with Next.js। तो अपने को दे रहा है या स्टेटस फुलफिल्ड आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। करंट डेटा, डेटा इस एरर, ये तो पहला वाला है, इसमें तो आया नहीं था, बट या दिस डज नॉट हैव इट, दिस हैज़ इट आई थिंक। या दिस इज़ द फुलफिल्ड वाला, बट सब में फुलफिल्ड क्यों दे रहा है, पेंडिंग है पेंडिंग है, माय बैड, अपॉलॉजीज अपॉलॉजीज। तो करंट डेटा क्या दे रहा है, दिस इज़ द डेटा जो डैशबोर्ड मैट्रिक्स का है पूरा, वो आ रहा है। देन वी आर गेटिंग अदर मेटा डेटा, मेटा डेटा नहीं भाई, वो एरर है, इज़ एरर फॉल्स, इज़ फेचिंग फॉल्स, इज़ लोडिंग फॉल्स, इज़ सक्सेस ट्रू, यानी कि सक्सेसफुल हो गया है अपना एपीआई कॉल। Is uninitialized false, refetch I don't know what that is, request id is this, then starter timestamp is this is a request id, I don't know what that is, but कुछ तो है request id, then there is requested timestamp, started timestamp fulfilled है। अब इसमें देखेंगे तो अपने को क्या आ रहा है, request id ये है, request id तो पहले ही बन जा रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द इनिशियल माउंट वाला, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद उसने जब कॉल किया, जब रास्ते में था तब ये था, ठीक है। तो सीन ये है कि पेंडिंग एंड पॉइंट नेम गेट डैशबोर्ड मैट्रिक्स रिक्वेस्ट आई डी इज दिस इज अन, नहीं नहीं, स्टेटस पेंडिंग है, इसमें स्टेटस क्या है, फुलफिल्ड है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही है, लाइक जो मैंने समझा था वही है। And we are going to say failed to fetch data. So this is if रहेगा कि हम ये जो डैशबोर्ड पेज है वो पूरा बना लेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रीड कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। यार मेरा चैट पढ़ने के लिए मैं लेके आ जाता हूँ, क्योंकि तुम लोग चैट में भर तो रहे होगे कुछ। लेट मी गेट समथिंग, लेट मी गेट माई फ़ोन। अपना फ़ोन आ गया शैटर्स। लेट मी सी चैट में कितने लोग आए हैं। बढ़िया, 1 लाइक कर दिया स्ट्रीम को महाकाल के नाम पे, सब्सक्राइब भी कर दिया। चलो भाई, लेट्स गो।
we have an error. And below this, we already copied. Hmm. So this is if we have an error. And below this, we already copied it, but I think I overrid my copy. Already we have done it. We know जो भी अलग अलग चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आता है ये इसके रिटर्न में से we can make use of that, and I think we saw that everything is getting on over there in time. Copying. So I'm going to do class name, place that in. स्ट्रक्चर क्या है इसका? ये तो ही इज़ क्रिएटिंग द यूआई, तो अगर लोडिंग हो रहा है तो इट इज़ गोइंग टू गिव लोडिंग ओवर देयर, अगर लोडिंग नहीं हो रहा है तो इट विल बेसिकली गिव दिस थिंग विच इज़ ये दो ही है, कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं हम बेसिकली। लोडिंग है तो ये, लोडिंग नहीं है तो वी आर डूइंग ये। इसको क्या बोलते हैं ये वाले इफ एल्स शिट को क्या बोलते हैं? ट्रू, और अगर ट्रू रहेगा तो ये क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर कॉल्ड? लेट्स गो टू चूट जीपीटी एंड आस्क ओवर देयर कॉल्ड इन कंडीशनल, नहीं क्या बोलते हैं, ऑप्शनल चेनिंग आई थिंक। इज इट कॉल्ड ऑप्शनल रीडिंग? टर्नरी ऑपरेटर होता है। ओके व्हाट, टर्नरी लड़ाई कर देते हैं भाई। ऑपरेटर वर्सेस ऑप्शनल चेनिंग, डिफरेंस क्या है मेरे को ये बताओ, इन दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, ऑप्शनल चेनिंग इज बेसिकली अगर अनडिफाइंड है तो वो नहीं करेगा, अगर नल आ रहा है या फॉल्सी वैल्यू उसके अंदर, फॉल्सी वैल्यू नहीं, इज इट फॉल्सी वैल्यू, अगर उसके अंदर फॉल्सी वैल्यू रहेगी तो उसको नहीं दिखेगा। टर्नरी ऑपरेटर ये है। if else like in evaluates the condition and returns one of the two values, right. ऑब्जेक्ट्स में यूज होता है। गॉचा ओके, टर्नरी ऑपरेटर वर्सेस ऑप्शनल चेनिंग उसको बोलते हैं। गॉट इट JS 101, And that should give us something that we can see. And it is not showing because we have not imported. So we're going to do that. So we're going to say card, sales summary, make sure it's there. So as you can see, we have card sales extra. ये नुबड़े ने एक सेकंड देखने तो मेरे को, Sure that. पहले पॉपुलर प्रोडक्ट्स बनाया, फिर सेल समरी बनाया, नहीं पहले पॉपुलर प्रोडक्ट्स बनाया वीडियो में, ठीक है, उसके बाद इसने बनाया परचेस समरी, और उसके बाद सेल्स समरी बनाया टेक्निकली, राइट। और इसके परचेस पर समरी वाला ट्यूटोरियल में ये सेल्स समरी पहले से बना हुआ है, उसका वो उसमें से कॉपी कर रहा है। So we're going to say card, क्या बात है, sales summary, बेटे। make sure it's there. So as you can see, we have card sales summary. The color is not what we want, so we're going to set it to background of white. And we're also going to do some extra different styling. So I'm going to give it a shadow of MD. तो आई थिंक एवरीथिंग इज डन, लोडिंग हो गया, देन देयर इज, दैट डजंट रियली मैटर ब्रो। द ओनली थिंग व्हिच मैटर्ड वाज दिस, ये वाला फॉर द ग्रिड के लिए, व्हिच वी हैव ऑलरेडी रन। रो स्पैन 2 है मोबाइल वगैरह में, एंड देन फॉर larger screen size it is row span 3, right. रो स्पैन 2, रो स्पैन 3 है एक्सेल के लिए, कॉल स्पैन 1 है नॉर्मली फ़ोन वगैरह पे और टैबलेट वगैरह पे इट इज़ कॉल स्पैन 2। दो टुकड़े लेगा बेसिकली, एक टुकड़ा लेगा, दो टुकड़े लेगा, और LG पे कॉल स्पैन इज अगेन 1। ओके Rounded. बाय, बट लेट मी जस्ट सी क्यों हो रहा है ये। दिस इज़ द सेल समरी विच इज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, ठीक है। नीचे आ जा भाई। सो स्मॉल में क्या है, स्मॉल में इसका सिस्टम ये है कि रो स्पैन 2 है, राइट, रो स्पैन इज 2। गॉट इट। उसके लिए पेज में जाना पड़ेगा। रो स्पैन 3 है, ओके। empty migrate calls to span 6 है। इसमें कॉल्स का तो कुछ सीन ही नहीं दिया है ब्रो। If nothing is mentioned for calls, then it is, what is it taking?
calls 2, then there is LG में grid calls 3, Excel में overflow auto. कॉल स्पैन 2 है, MD में कॉल स्पैन 2 है, SM में कॉल स्पैन 1 है, MD में कॉल स्पैन 2 है, यानी डबल ले रहा है बाकियों का, एंड एक्सेल में अगेन कॉल स्पैन 1 हो जा रहा है, यानी कि फिर से छोटू हो जा रहा है ये. समझ गया समझ गया समझ गया मिलॉर्ड, समझ गया. Corners of 2XL, Then row span. we are doing nothing much. लास्ट डेटा पॉइंट क्या है, फॉर्मेट पी के अंदर क्या है लास्ट डेटा पॉइंट. पहले तो लास्ट डेटा पॉइंट क्या है, लास्ट डेटा पॉइंट इज परचेज डेटा डॉट लेंथ -1, यानी जो लास्ट वाला शिट है, जो लास्ट वाला परचेज डेटा का जो इधर मैंने ऑलरेडी ले रखा है वो, यानी कि ये वाली वैल्यू को बेसिकली लिया गया है और उसका क्या लिया है, परचेज डेटा का व्हाट थिंग हैज़ बीन टेकन अप यार. लास्ट डेटा पॉइंट आई वांटेड टू सी, लास्ट डेटा पॉइंट का न्यूमरल, आई डोंट नो व्हाट न्यूमरल डज फॉर फॉर्मेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स. कुछ तो फॉर्मेटिंग कर रहा है नंबर का. डॉट टोटल परचेस्ड, यानी कि इसका टोटल परचेस्ड इज, देयर इज़ नो टोटल परचेस्ड. दिस इज़ फॉर व्हाट, सेल्स का है क्या, और मैं किस में हूँ, परचेज समरी में हूँ. कौन सा कंपोनेंट बनना है यही नहीं पता है मेरे को. बट परचेज समरी पे एक बार एनालाइज कर ही लेते हैं इफ़ यहाँ तक आई हैं तो. दिस इज परचेज समरी एंड आई थिंक दिस इज़ द थिंग दैट वी वर मेंशनिंग अबाउट, कि जो लास्ट डेटा पॉइंट था उसका डॉट टू टोटल परचेज, लास्ट डेटा पॉइंट में टोटल कितना परचेज हुआ है, तो आई थिंक 7.88 मिलियन इज दिस, डॉट चेंज परसेंटेज राइट, डॉट टोटल परचेज वो है और चेंज परसेंटेज ये है, यानी 95.76% गिरा है. कितना, 7.18 मिलियन की सेल्स की हैं, तो मतलब इनका 14-15 मिलियन कुछ था भाई. भाई कुछ भी नंबर डाल दिए. Actually, we already have a row Let's span. see about this. We're going to do flex. तो इसके अंदर रो स्पैन 3 है, एक्सेल में रो स्पैन 6 है, बीजी वाइट, शैडो एमडी, शैडो 2 एक्सेल. बेसिकली कॉल स्पैन वही है, कॉल स्पैन 1 करूँगा तो बात वही है, बट इफ़ आई डू लाइक कॉल स्पैन 2 देन इट विल टेक द होल थिंग. सी, this is what call span 2 basically did. It took the whole shit and I pressed something which I was not really supposed to be pressing. Rebuild होगा, 3 लूँगा तो क्या सीन होगा. हो जा भाई, Next.js build, React with white is much more better than this shit. क्या एरर है क्या कुछ, rebuilding 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 rebuilding. इतना स्लो क्यों चल रहा है, हीट भी हो रहा है सीन. हाँ खुला खुला, 4 लिया तो ये अलग ही उसमें चला गया भाई. कॉल स्पैन 10 दे दो भाई इसको, 10 दे दिया तो क्या कर रहा है ये भाई, पूरा ही ले लिया बेसिकली. ग्रिड का रिवीजन हो रहा है अपना, ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार. ग्रिड का रिवीजन हम भी कर रहे हैं. और क्या था इसके अंदर, ये था यूआई में, तो ये सारी चीज़ें ही हैं. देन उसके बाद पूरा बेसिक सा लेआउट है जिसके अंदर पहले सबसे ऊपर ये है, देन देयर इज़ अ चार्ट एंड देन देयर इज़ दिस बुलशिट. तो आई थिंक ये रहा सेल समरी ऊपर. देन उसके अंदर वी आर स्टार्टिंग टू पुट सम वैल्यूज़, टोटल सेम सम डिवाइडेड बाय अ मिलियन में बता रहे हैं, तो वही 12.98 कर दिया 1000 से डिवाइड करके, टू लोकल स्ट्रिंग, वही जो भी है मिलियन. एंड देन देर इज़ व्हाट, एवरेज चेंज परसेंटेज डॉट, ये वैल्यू कहाँ से निकाला है, सेल्स डेटा डॉट रिड्यूस करंट. ये सब क्या है, accumulated करंट, मेरे को इतनी सारी चीज़ें मैंने कभी यूज़ होती हुई देखी ही नहीं है. देर इज़ दिस अंडरस्कोर एंड देन देर इज़ दिस अरे, आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज. तो क्या किया है, डिवाइडेड बाय accumulated प्लस करंट प्लस डॉट चेंज परसेंटेज,
डिवाइडेड बाय अरे डॉट लेंथ, एवरेज निकाल रहे हैं ना हम. एंड आई हैव नो आइडिया हाउ दिस इज़ वर्किंग, बट अक्यूमुलेटेड करंट अंडरस्कोर क्या चीज़ है मेरे को नहीं पता है. वाई हैव वी टेकन दिस अंडरस्कोर, बट या रिड्यूस के बारे में पढ़ना पड़ेगा मे बी मेरे को. मैंने सिर्फ अक्यूमुलेटर वैल्यू और जो करंट वैल्यू रहती है इन दोनों चीज़ों के बारे में पता है, अंडरस्कोर और अरे का नहीं पता. अरे डॉट लेंथ, नो आइडिया. वाई डिड वी नॉट मेक यूज ऑफ समथिंग लाइक इंडेक्स इफ वी आर ट्राइंग टू गेट एवरेज, कि सबका टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज, द टोटल ऑफ एवरीथिंग डिवाइडेड बाय द नंबर. अरे डॉट लेंथ, बट ये कुछ अलग मैथमेटिक्स हो रहा है ब्रो, ये इतना मैथ्स नहीं पढ़ा है मैंने. तो एवरेज टाइम फ्रेम हो गया, टोटल वैल्यू सम, दिस विल बेसिकली गेट द टोटल सम ऑफ सेल्स का. देयर इज हाईएस्ट वैल्यू डेटा इज इक्वल सेल डेटा डॉट रिड्यूस accumulated करर, accumulated डॉट करंट वैल्यू इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क accumulated इनटू करंट. ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है. बोलो जी ब्ला ब्ला ब्ला. कौन सा हाईएस्ट वैल्यू डेटा इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू डेटा डॉट डेट. बाबर बाबर मोरे इतनी अदस तुसे चुन चुन पाई हूँ. दिख रहा है क्या इसमें अच्छे से? दिख तो रहा है, दिख रहा है भाई, सीन दिख रहा है. सीन अभी भी Flex column with justify between. ये रहा. नहीं, डेली वीकली और मंथली सेट टाइम फ्रेम, डेली वीकली और मंथली है. ट्यूपल नहीं, उसको क्या, ट्यूपल तो दो चीज़ों के लिए होता है. इनम होता है ना, इनम 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 पता नहीं. वीकली मंथली सब में ये एक ही चीज़ दिखा रहा है, बाकी बाकी तुम देख लो भाई. टाइम फ्रेम यूज़ कहाँ हो रहा है? टाइम फ्रेम कहीं नहीं यूज़ हो रहा है बेसिकली, हर जगह सेम डेटा ही शो हो रहा है. अगले पैच में आएगा. And again, we're going to open up card popular products. We're going to copy all of this right here with is loading and the beginning of the fragment. द मेन लॉजिक ओवर हियर इज इसके अंदर कि ये चार्ट आ कैसे रहा है, राइट. वी ओनली केयर अबाउट द चार्ट. तो चार्ट के अंदर इन लोगों ने कैसे सेपरेशन किया है, 0 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 6 मिलियन 8 मिलियन, ठीक है. अब ये बकचोदी हुई कैसी है, ये देखना है. रिस्पॉन्सिव चार्ट, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंटेनर है. फूटर वूटर बकचोदी है. हाईएस्ट सेल 5 days, ये सब वी डोंट केयर अबाउट दिस. दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दिस इज़ द कोर लॉजिक ऑफ हाउ आर फ्रंट एंड, मतलब फ्रंट एंड का दिस इज टेम्पलेट, कुछ नहीं है ये. स्टैटिक शिट है. बार चार्ट, ठीक है. हमने यूज़ किया रिस्पॉन्सिव कंटेनर जो कि हमको मिला है फ्रॉम दिस लाइब्रेरी कॉल्ड रीचार्ट्स, राइट. वी आर यूजिंग रीचार्ट्स. हाँ, रीटार्ड, वेरी क्लोज टू रीटार्ड, रीचार्ट. तो हाउ आर वी डूइंग डेट की एक्स एक्सिस कौन सा होता है? एक्स ये वाला होता है, वाई ये वाला होता है. तो ये एक्स एक्सिस है बराबर. तो एक्स एक्सिस में हम बार क्यों बना रहे हैं? we have an x-axis, there is a tooltip, there is a bar. Are we mapping shit out or how are we doing things? x-axis एक ही x-axis है, y-axis रुक जा. the value return date dot get month. सेल्स डेटा, इसको अंदर हमने डेटा दे दिया है. सेल्स डेटा, मार्जिन टॉप 0, राइट 0, लेफ्ट -25, 25 लेफ्ट में -25 है. देन देर इज बॉटम में 0 है. देन वी हैव व्हाट, कार्टेशियन ग्रिड स्ट्रोक डैश रे इज इक्वल टू फॉल्स. देर इज कार्टेशियन ग्रिड के अंदर है ये. भाई ये हो कैसे रहा है?
just to make everything easier. So this is going to take the sale data again. We're going to say reduce, ये मेरे को देख and we are going to pass in 50 मिनट the accumulation value with the current value. And we are going to just skip over the index. That's why I put an underscore. And I'm going to open this function up, current value. And we are going to just skip over the index. That's why I put an underscore. And I'm going to open this function up. We're going to do return ACC plus current.change percentage. And we want to make sure it exists. So that's why I have this not operator with an array.length. And this should have in the starting point of 0. And if it doesn't exist, we're just going to say of 0 like that. And this should not be a question mark. It should be a division. तो क्या कर रहे हैं, ज़ीरो करंट डॉट चेंज परसेंटेज, यानी कि करंट डॉट चेंज परसेंटेज ज़ीरो रहेगा ये, डिवाइडेड बाय अरे डॉट लेंथ. अरे डॉट लेंथ क्या है अपने को नहीं पता. So this will give us the average change percentage for the next value. Now don't worry about the calculations. You can, most of the time you'll probably have different calculations depending on your project. But in this case, this is what is calculated to get the value of 5.48%. मेरे को जीपीटी की गरज की ज़रूरत है भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एवरेज चेंज परसेंटेज. Make me understand about this function, ठीक है. Let's break down this function step by step. Cons average change percentage is equal to 0 dot reduce accumulated current. ठीक है. This is an array. This is an array of objects where each object likely contains a change percentage field. Unused parameter, अच्छा. The original sales data array dot plus change percentage. So that change percentage is not null or undefined. Okay, is not null or undefined, only valid in TypeScript, not in plain Java.js. Correct. तो ये बेसिकली ऑप्शनल चेनिंग टाइप शिट है, कुछ वैसा ही कुछ है. फॉल बैक कहाँ है, अच्छा ये रहा. Is 10 divided by 3. बट ये एवरेज आउट क्यों नहीं हुआ 3.3. अब ये एवरेज कैसे निकला. बट ये टोटल को डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं किया. आंखें खुली हो या हो बट. For the change overall, the average change that's happened with our sales data. And below this body header, we need to make sure. So if we have a closing div, we want this to be in between these two divs over here.
So we're going to give it a select HTML tag. And inside the select, we're going to give it adjusting a few things. So over here, so we're going to give it select, we're going to give it padding of, we're going to spell monthly incorrect. And as you can see, we have our value. So now this is just going to be static. It's not going to be dynamic and dependent on our data, but you can do it depending on how your data is set up. So, and we are use case. So I'm going to grab out my favorite, and we're going to be using recharts. I believe recharts is now my favorite charting library because it makes it so easy to use. So I'm going to grab responsive container, and we are going to pass in a width of 100%, a height of 350, which is a value I determined, which was good for our use case, and a padding of 7 in the X direction. Inside this, we're going to pass in a bar chart from recharts, so make sure you import the correct one. And here we can pass in our sales data directly. Did I call it sale data? Oh, okay. So I'm going to select all of these with Command D. I prefer sales data because it makes more sense to me. So I'm going to go down, make sure we have that changed, and I'm going to give it a margin with top of 0, right of 0, left of -25, bottom of 0. So that gives us our margin. And right now it is not visible because we have to add a few more other things. We're going to give it a Cartesian grid. And by the way, this is all in the documentation of recharts. So if you go to recharts, just look at this and copy how they are all setting up. They have a lot of examples and they have a good API and up tier. And anyways, let's go back to our application. We're going to do stroke dash array like so with an empty double quotes. We're going to say vertical is going to be false. And we're going to close that. And I did spell stroke dash array incorrect. We're also going to give it an x-axis from recharts with a data key of date with the tick formatter. And we are going to pass in a value. So this will provide the setting for how the ticks are going to be set up. So you can make it so it's more spaced or less spaced or programmatic. So we're going to set this to be date with new date and passing our value that we have. And we're going to make sure we return a string with date.getMonth. So we're going to grab the month. We're going to add 1. Divide that by date.getDate. And we're going to close the x-axis. Data sees data margin, Cartesian grid, stroke dash array, vertical false. Data key is equal to date, tick formatter, value constant is equal to new date. Vertical. And we're going to be doing the same thing for y-axis and adjusting a few things. So I'm going to make sure we import y-axis like so, making sure we use the linter to import it. So we're just going to change up the tick formatter, get rid of the date, and I'm going to put another here, 3 zeros behind the 1. And this should be in parentheses, value divided by 1 million. And we are going to do 2 fixed, so we can set this, set the decimal points to be just 0. So there's no decimals. We're going to get rid of the data key, but we're going to give it a tick
with font size of 12, a dx of -1. So that's the tick size. And we're going to give it a tick line of false. So that means there will be no tick, and an axis line of false as well. So these, as you can tell, it's pretty self-explanatory. X-axis determines the X values, and the Y-axis determines the Y settings. We're going to also give it a tooltip from recharts, make sure, not from. Pass in value with number, an arrow, and I'm going to return a string like so with 2 double $signs with a value .to local string, and making sure it's in English or whatever language you desire. This should be a closing tag as well. And it seems like this actually should not be curly braces. This should be an array. Why? Like that. So that we're basically returning an array. And then we have a bar that we need to set. So this will determine the settings for our bar keys. And we're going to give this a total value as the data key, with fill being 3182CE. And a bar size of 10, and a radius with an array of 10, 10. यार थक रहा हूँ मैं. 0 was the between actually sales data dot a div a sales summary bar chart and keys, and we're going to bar size, and as you can see we now have our मेरे को ये रिचार्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज या दिस इज स्लाइटली डिफरेंट. बार चार्ट ये रहा एंड वी आर क्लोजिंग इट ओवर हेयर. वी आर स्टार्टिंग दिस ओवर हेयर. बार चार्ट के अंदर है कार्टेशियन ग्रिड. व्हाट द फक इज अ कार्टेशियन ग्रिड? तो भाई ये खुल जाए तो बड़ी बात है. मतलब
Am I constantly making changes over here? फाइल में जाने दो. ऑटो सेव कहाँ है? ऑटो सेव ऑफ कर दो भाई. रो देता है भाई. माय गॉड. ओ सॉरी. ऑटो सेव किया बंद, इसको किया पिन. अब ये खुलेगा. खुल गया. राइट. अब ये सीन हो गया है. अब मेरे को देखना है कि व्हाट इंडिविजुअल थिंग्स आर डूइंग इन हियर. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं. द फक इज दिस कार्टेशियन ग्रिड फॉर. ठीक है. ये रहा. अच्छा, कार्टेशियन ग्रिड वो लाइंस थे. कार्टेशियन ग्रिड्स वर दोस लाइंस या पूरा ग्रिड? अच्छा, कार्टेशियन ग्रिड ये थे, वर्टिकल थे. वर्टिकल फॉल्स है यानी कि हॉरिजॉन्टल है. वर्टिकल फॉल्स है. वर्टिकल ट्रू कर दूंगा तो ये वर्टिकल हो जाएंगे. ओ हैव टू सेव. राइट. तो वर्टिकल भी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा, दोनों तरफ से आ जाएगा. ये भी अच्छा लग रहा है. नॉट बैड. नॉर्मली एंड इफ आई डू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ तो वो वैसे कर देंगे. उनका एरिया भी स्ट्रोक डैश अरे, आई डोंट नो व्हाट दैट स्टैंड्स फॉर, बट ये रहा एक्स एक्सिस. एंड इनसाइड ऑफ दिस वी हैव द होल सेल्स का डेटा. राइट. आई वांट टू लॉग दिस सेल्स डेटा सो बैड. Right, let me save this. We have an array of this sales data. ये रहा. इसके अंदर 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 5 के पाँचों चीज़ आ चुके हैं. एंड what how does it know कि it has to create those things 5 times? Right, is what my question is. ये रहा x axis. यानी x axis ये चीज़ है. x axis. क्या किया इसने? डेट डॉट गेट मंथ. ठीक है. +1 डिवाइडेड बाय डेट डॉट गेट डेट. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ नशा इज दैट. डेटा की इज इक्वल टू डेट. आई थिंक टूल टिप तो यही लग रहा है. ये जो हम हवर कर रहे हैं तो चीज़ें आ रही हैं वही हैं. तो लेबल कौन सी डेट इज इक्वल टू न्यू डेट रिटर्न डेट. बार रिजल्ट में बार है.
आई थिंक स्क्वायर आएगा, मेरे को लगा ऐसा। मेरे को ये नहीं समझा फिर ये इसके अंदर कितना ऊपर तक ये जाएगा, वो कैसे डिफाइन हो रहा है, दैट इज़ नॉट समथिंग विच आई अंडरस्टूड। लाइक वाई एक्सिस का जो टोटल क्या है, वैल्यू रिटर्न ये रहा, वैल्यू डिवाइडेड बाय ये टू फिक्स्ड जीरो एम, राइट। अब ये वैल्यू क्या चीज़ है, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट। टिक font size 12, then there is what dx is minus, this is something which I didn't really understand, but yeah. Our lovely sales summary bar chart. Fragment, horizontal, climb. We're going to take the highest value through the we're going to locale date string. We're going to pass English US and pass in an object and set there, and we see highest sales date. I think we're forgetting some value over here. So key part is set. And there, that's it for card sales summary. So we're going to go to page.tsx, and we're going to be working card purchase summary next. So this one is a pie chart. We're going to have a number in between with the categories over here. And the page.tsx chart, we're going to have a number in between card purchase summary next. So this one is a pie chart. We're going to have a number in between with the category. Expense summary है ये, so we have to create Categories over here, and an average and a percentage up like that. So categories over here. इन ऑटो सेव अपने को तो ऑन चाहिए, हम बार बार सेव करने की आदत नहीं है हमको। And an average and a percentage up like that. With the categories over here, and an average and a percentage up like that. So I'm going to go to our code. I'm going to copy this class name over here, and we are going to and we're going to go over here as well, get rid of React. And I'm going to go over here, add a class name box, and I'm also going over. So if I go back here, I can grab this use get dashboard metrics query because we're going to be using it again. I'm going to pass this in over here to get
data and is loading. So use get dashboard. अरे भाई क्या दिक्कत आ रही है इस सज्जन को यार ऑटो सेव नहीं ऑन कर सकते इस वाले शिट के अंदर metrics query, we can pass that in with @/state API. And I'm just going to call this dashboard metrics yeah bro why are we all of a sudden passing types to give us a different name rather than data, which can be a little more ambiguous. okay I think there are two different people here Also going to set the colors of what the pie chart looks like.
So we want to set the colors variable outside of it so it doesn't always re-render. It's just more of a performance benefit. Very much Okay, okay. of what the pie can be a little more ambiguous. Okay. उसने color I'm also going to set the colors of what the pie chart looks like. So we want to set the colors variable outside of it so it doesn't always re-render. It's just more. got it. तो ये इसके बाहर रखेंगे तो it will not always re-render whenever the card expense summary will basically re-render. More of a performance benefit. I thought the Very card minor. would basically be re-render. We just don't want this to be. OOC49F. I don't know what that is. OOC49F. Right. Then there is another color. Then there is another color. I don't know. Re-rendered every single time. So A8FE and FFBB28. So we're going to have our colors listed just like that. And let's double check everything is working. I'm going to save this. And let's double check everything is working. FFBB28. FFBB28. So we're going to have our colors listed just like that. And let's double check everything is working. I'm going to save this. And for some reason, I had to refresh the page. Card expense summary is listed with a background gray of 500. Everything is working. Card expense summary is listed with a background gray of 500. So to start off, I'm going to change this background to be white with the shadow of medium, rounded corners of 2XL with flex and flex column. Justify. Shadow MD. Then there is what? Rounded to XL. Okay. Then there is flex call. By vertically properly. Okay, justify. And just like before, we're going to go back over here. We're going to copy this is loading over here, these 4 lines. Shadows add कर दिए हैं बस और तो कुछ अंतर नहीं है. Then we are copying this from card purchase summary, which is loading. अच्छा प्रिटियर चलता ही नहीं है इसमें. शाबाश. Paste it in place, close the parens and close the brackets. I'm also going to copy this header.
this, paste it in over here, and we are going to call this expense sum. And after looking, इसके पीछे लाइन कैसे आ रहा है? Justify between, then there is text LG, font bold, mbpx, padding top. Why are we getting a line over here though? I don't know. Why are we getting a line over here? बॉर्डर तो कुछ है नहीं अपने पास, तो यहाँ कैसे रहा? नो आइडिया. looking at this, ये लाइन कैसे आ रहा है? हैं? How are we getting a line over here? अच्छा. अच्छा horizontal line डाला आपने. did realize I kind of missed something. So Popular Products has a line of that. So I'm going to be adding it to Blessing in each of them. disguise. So I'm going to save this. सही कर दिया. You'll see that horizontal line. Same thing over here in purchase summary, and also going to have it for sales summary as well. So I'm going to open that up, go down right here with the top of 5 to give it some. And it does seem like right here with the value, I do want to add a little bit of margin top of 5 to carry flex. Only flex is large screen. And we're going to do justify between. When flex is activated. We're also going to give it a padding right of 7. And in here, I'm going to give it a div with the class name of relative, because we want to place this in a specific way, and we want to have the text in the center of the pie chart. So we need to make the parent class to be relative. Specific way, and we want to have the text in the center of the pie chart. So we need to make the parent class to be relative. So right here, I'm just going to call this body, and this part should be chart. All right, so we are going to pass in responsive container. As usual, like
from recharts with width of 100%, a height of 140. And close that out. And inside here, I'm going to have a pie chart from recharts. Close that out, and inside I'm going to give it a pie from recharts with data being expense categories, which we have not created so far. पता नहीं ये कौन सा नया बग आ गया है। Inner radius is equal to 50. Outer
radius will be be 60. Fill will be 8, 8. Eight. For D8, data key will be value. Name key will be name. And we also want to set the CX to be 50%, and CY is going to be CX to be 50%, and CY is going to be 50%. So I'm going to close that out. So before we go on, we're going to set up the expense. I'm going to close that out. So before we go on, we're going to set up the expense categories. So I'm going to go back up. And there's a few variables that we want to create. So we're going to do some calculations again. Pass in dashboard metrics, make sure it exists. So we're going to do expense by category summary. Erase that space and make sure it already exists. So we have that. And also, so we are going to get expense sums. So to do that, we want to grab the variable we just created. We're going to use reduce once again, and we are going to do some calculations with the accumulation, and we are going to do some calculations with the accumulation, and we are going to create a TypeScript type up here. I'm going to call this expense sums. So I'm going to say category, the string for the property, number for the value. And over here, I'm going to give it an item with expense by category. Category summary like so. Pass in a function like that, and what I'm going to do is const category will be equal to item.category, and what we're going to do is add a text of expenses so we can get the string for the category. We're going to grab the amount by saying parse int
via item dot amount, comma 10. And what we're going to do is if accumulator category does not exist, we're going to set that value to be 0. Like so. And from here, I'm going to set the value and add it if it doesn't already exist. And we're going to do return ACC. And from here, I'm going to add an empty object like so. And we have our भाई अपना हो गया है भाई, आज का स्ट्रीमिंग डन है भाई। अपन जा रहे हैं अब, बस हो गया भाई। थोड़ा बहुत ये काम करके मैं सो जाऊंगा। बाय बाय। अरे चल भाई, चलो गाइस, आज तो अपन ने मेहनत कर लिया है। अपने को 31 मई तक वी हैव टू गेट an offer of minimum 12 LPA. That is what the goal is. Let's fucking go. We did well today. We will read. सोने से पहले रीड करूँगा थोड़ा, ठीक है। अबाउट द बुक विच आई एम रीडिंग राइट नाउ इज़ कॉल्ड द प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर, वो रीड करूँगा। और अगर फिर थोड़ी और एनर्जी बचती है देन आई वुड रीड दिस बुक। मैं थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक रिकमेंडेड बाय अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो ये या तो हम ये बुक पढ़ेंगे एंड में, या तो हम ड्रीम करेंगे, ड्रीमिंग।